student. Our topic is animal tissue. Animal tissue. You know very well the body is made up of cell, tissues, organ and organ system. So we will discuss in here chapter in detail. We will discuss here about the animal tissue. First of all, the name animal tissue was given by Bichat. The name animal tissue was given by Bichat, and a definition of tissue. It is the group of cells. It is the group of cells. कैसे cells? The cells which are similar in origin. Similar in origin. Origin similar हो, ठीक है ना? Similar in structure and performing the same function, similar function. So the group of cells having the similar origin, structure and function, it is called as tissue. It is called as tissue. The study of tissue is called histology. The study of tissue is called histology. It is known as histology. So we are going to study the detail of the animal tissue, various type of tissue which are present in our body and performing the specific function. So once again, the name animal tissue is given by Bichat. Secondly, definition, it is a group of cells having similar origin. Origin means the whole body is formed of three germinal layers. Three germinal layers का बना होता है अपनी पूरी बॉडी, ठीक है ना? तो यहाँ पर origin में मैं I should say the sum of the body is part have been derived from ectoderm. The word is ectoderm. So the word is ectoderm. Origin may be ectoderm, means the body part which is made by germinal layer called as ectoderm. For example, skin, our eye, it is made up of ectoderm. Similarly, origin can be, so it is ectodermal origin. Second origin, it can be mesodermal. Second origin can be mesodermal, like our heart, our blood, or circulatory system. It is mesodermal in origin. And finally, one more origin is possible, and it is endodermal. So here is the introduction of the animal tissue. First of all, the name was given by Bichat, and the study of tissue is known as histology. Secondly, I have defined the definition of the tissue. What is tissue? So it is the group of cell. कैसा group of cell which is having the similar origin. Origin की possibility. Origin means it may be ectodermal, may be mesodermal, or may be endodermal. The part which is derived from ectoderm layer, ectodermal. The part which is derived from mesodermal, that is mesodermal. And part which is derived from endoderm, germinal layer, they are endodermal origin. So this is about the definition, origin, and the introduction about the tissue. Now comes, I have explained you ki what is tissue. So I am explaining a group of cells which is having the similar origin, structure and function. They are called as tissue. But here comes the blood. This is the example. This is the unique example. It is also a tissue. Connective tissue, and it is made up of number of cells. One cell is RBC, the second cell is WBC and platelets. ये यहाँ पर cells present हैं. Blood is made up of solid part, RBC, WBCs and platelets. Now see here, nucleus is the structure. I am taking the nucleus as a structure, and this nucleus is absent in RBCs. In WBCs, nucleus is present, and in platelets, nucleus is absent. See, यहाँ पर the structure becomes different. The cells are there. It is a connected tissue. Cells are there, but their structure becomes different. In RBC, nucleus is absent. In WBC it is present, and in platelets again it is absent. Those cells are different in structure, and it is the exception case of blood. Secondly, we see the function that these RBCs, they help in transport of gases. Which gases? Oxygen and carbon dioxide. RBCs helps in transportation of gases. Secondly, if we see the function of WBCs,
they helps in maintaining immune system. तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन भी कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया. तो यहाँ पर blood is the exception where the cell having the different function and they are having the different function also, different structure and function is present. Similarly, these are the platelets, and here the platelets, the function of the platelets, it helps in clotting of blood. It helps in clotting of blood. So we see here that blood is as an exception where the cells are having the different function, where the cells are having the different structure, but all of these having the common origin, and they have common origin, they have common origin or mesoderm. ठीक है ना, they all are mesodermal in origin, they all are mesodermal in origin, they all are mesodermal in origin. So the blood, you have to remember, it is exception. I'm telling again, it is what is tissue? It is a group of the cell having the same origin, same structure and same function. But blood is, in case of blood, here the number of cells are present. They are differentiated as RBCs, WBCs and platelets. See, in RBCs nucleus is absent, in WBC it is present, and in platelets again they are absent. Those cells are different in structures. The cells are different in structure. Similarly, if we see the function, RBC helps in transport of gases, oxygen and CO2 helps in for it. This is the function of main function of RBC. Similarly, WBC, they don't help in transportation of gases. They help in maintaining the immune system. They develop the immune system. One cannot imagine the immune system without WBCs. Next come the platelets. Again, in platelets they helps in clotting of blood. Blood को clot होने से help करता है यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड में स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया है. बट हियर द ओरिजिन इज कॉमन, द ओरिजिन इज कॉमन, एंड दैट ओरिजिन इज मेसोडर्मल. ओरिजिन इज मेसोडर्मल. ओरिजिन इज मेसोडर्मल. नाउ सी, on the basis of function of tissue, on the basis of function of tissue, the tissue can be divided, on the basis of function of tissue, the tissue can be divided, नंबर 1, फंक्शन के बिहाफ पर हम टिश्यू को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं. We divide into 4 types. Number 1 is epithelial tissue. So this is the first tissue, epithelial tissue, and its main function is protection. इसका जो main function है, मैं function की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, the main function is protection from internal or the external environment. ठीक है, we will discuss detail about the epithelial tissue, but introduction, its main function is protection, and secondly, it forms the lining of hollow organs. Any hollow organ, stomach is there, so internal lining would be there, external lining would be there. तो internal external lining जो form करेगा वो mainly tissue अपना कौन सा होगा, epithelial tissue होता है. And above all, this one is important, origin of the tissue can be ectodermal. Origin of tissue can be ectodermal origin यहाँ पर होता है. ectodermal origin is present here, ठीक है ना. mesodermal origin is present here and endodermal origin is present. तो possibility of origin is all the germinal layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. ectoderm, mesoderm and endoderm. For example, ectodermal origin जो टिश्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं, we can give the name here skin. Skin में यहाँ पे epithelial tissue होगा, तो epithelial tissue which forms the skin, the origin is ectodermal. Secondly, we can take here example of endothelium. This endothelium forms the lining of the blood vessel. We will discuss it later on, but here the simple example, it is derived from mesoderm. And the gut lining, alimentary canals gut lining is formed by endoderm, formed by endoderm. So these are the examples for the origin of epithelial tissue. Again I am repeating, it has all the type of origin. Ectodermal origin, for example skin, mesodermal origin, for example endothelium, and endodermal origin, for example gut lining.
lining, gut means alimentary canal, ठीक है ना. Entire gut lining is formed of endodermal origin except the esophagus, ठीक है ना. Rest of the all the parts of the alimentary canal, they are lined by the lining is present here, and it has the endodermal origin. It has endodermal origin. Now comes here next tissue. It is connective tissue. It is connective tissue. So by the name it is very clear. Connective tissue. What is connective tissue? So by the name it is very clear that the tissue which connects the various part of the body, and the example is given here is blood and the lymph. Blood is here and lymph is here. So blood, it circulates entire part of the body from upside to down, upside, sideways, peripheral, central, every circulation is there. So it connects the various part of the body. Example is blood, and second example is lymph. ठीक है ना. Second example is lymph. What is lymph? We will discuss it in circulatory system. It is the filtered part of the blood. In brief, it is the filtered part of the blood which also helps in connecting the various parts of the body. And second function is of the connective tissue that it supports the body. By with the help of cartilage and bones. So supporting connective tissue, they are cartilage and the bones. Next point comes here. The origin is strictly mesodermal, means both cartilage, bones, blood, lymph, etc. they have been derived from mesoderm. So the origin becomes mesodermal. And the last point, and not the least point, is that it is the most abundant tissue of the body. बॉडी में जो सबसे ज़्यादा टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू. कौन सा टिश्यू हुआ? कनेक्टिव टिश्यू. सो I have explained you tissue. What is tissue? Definition of tissue. Name given by that is BChat. ठीक है ना. नेक्स्ट मैंने आपसे वहीं पे डिस्कस एक्सेप्शन लिया ब्लड का. ब्लड को क्या बताया मैंने कि यहाँ पर सेल्स भी हैं और उनके फंक्शंस भी हैं, बट बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर डिफरेंट. द ओनली थिंग कॉमन हियर इन ब्लड इज that is their origin, and on the basis of function the tissue is divided into 4 types. I have explained you too. The first one was epithelial tissue. I am repeating again, and its main function is protection. Second, it forms the lining of the hollow organs. Any hollow organ, stomach is there, duodenum is there, ileum is there, jejunum is there, large intestine there. Any hollow organ, it would be lined by epithelial cells. And one important thing was discussed origin. Epithelial tissue can be of ectodermal, mesodermal as well as endodermal in origin. Second, I have explained you connective tissue, that it connects the various part of the body, and with an example is blood and the lymph. What is lymph? It is a filtered part of the blood. It forms the lymph, ठीक है ना, and it supports the body. When it supports the body, the example is cartilage and bone. Next, origin is strictly mesodermal. No exceptions are there. Strictly mesodermal origin होता है, and they are the most abundant tissue of the body. Body में अगर सबसे ज़्यादा tissue कोई पाया जाता है तो वो कौन सा tissue पाया जाता है? It is connective tissue. I have explained you the 2 tissues, epithelial tissue, and second was connective tissue. Now comes the third one, and third tissue is muscular tissue. Muscular tissue, as clear by the name, it includes muscle. और muscle का काम क्या होता है? वो help करते हैं किसमें? Movement and locomotion. So locomotion and the movements, they are being governed by the muscles. ठीक है ना. तो यहाँ पर include muscles, hands and movement and locomotion, and the origin is mesodermal. So exception is there. So what is the exception? The word is ciliary muscle. What is ciliary muscle? ठीक है ना. और you can say iris. ठीक है ना. These are the part of the eye. Obviously they are the part of the eye. And यहाँ पर जो muscle होती है, it is ectodermal in origin. So this is the important one. Exception is important here. I am repeating here. Third tissue is muscular tissue. It includes the muscle. The function of the muscle, it helps in movements and locomotion. ठीक है ना. यहाँ पर movement and locomotion में ये help करते हैं, muscles help करते हैं. Origin is mesodermal.
all the muscles, they have the origin of mesodermal, means they have been derived from germinal layer mesoderm, but exception is there, ciliary muscle and iris, that they are the part of the eye. Obviously both these two are the part of the eye, these are the part of the eye, and the muscles are ectodermal in origin. So exception is important, so please remember that that muscle of that is ciliary muscle and iris muscle, they have the origin of ectoderm, have the origin of ectoderm, have the origin of ectoderm. Okay students, now comes nervous tissue. The last tissue which we have to classify on the basis of function, it is nervous tissue. अब इस नर्वस टिश्यू में क्या इंक्लूड हुआ, तो हमने बोला इसमें इंक्लूड होते हैं न्यूरॉन्स. व्हाट इज बीन इंक्लूडेड हियर, इट इज न्यूरॉन्स, एंड द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज दैट दे हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दे हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हेल्प करते हैं. एंड ओरिजिन इज एक्टोडर्मल, ओरिजिन इज ectodermal, so origin is ectodermal. So now see, origin is ectodermal. Nervous tissue, one exception is here again here the except, again the word is except here. So except what, except the word is microglial except it is the word is microglial cells. Microglial cells, these are the brain cells, these cells are found in the brain, and because neurons वहाँ पे भी हैं, so these are having origin mesodermal origin. The origin is mesodermal origin. Here the origin is mesodermal origin. So this is the exception one. ठीक है ना? And these microglial cells, they are phagocytic cells of brain. They are phagocytic cells. They are the phagocytic cells. ये phagocytic cells होते हैं. Phago means होता है, phago means what? Eating. Phago means what? Eating. Phago means what? Eating. Phago means eating. The word is eating. And cytic means, and the cytic means by cell. Cytic means by cell. So cell eating is known as phagocytosis. So once again, please hear, nervous tissue includes neuron. It includes neuron. It helps in control and coordination of body. It helps in control and coordination of body. Origin is ectodermal. Origin कैसा है? It is ectodermal, except microglial cells. Except microglial cells, they are found in the brain and they are having which origin? मेसोडर्मल origin. पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का origin कैसा है? एक्टोडर्मल है. एक्सेप्शन कौन सा? माइक्रोग्लियल सेल, ब्रेन सेल्स होते हैं, जो कि origin कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है. एंड देयर फंक्शन इज phagocytic. They are phagocytic cells. Phago means eating and cytic means by cell. तो cell eating is known as phagocytosis. Phagocytosis cells होते हैं. अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, ये जो न्यूरॉन्स हैं, प्लीज यहाँ पे देखेंगे आप लोग, these neurons, they do not divide. The neurons, they do not divide. Neurons do not divide. Why they do not divide? Please देखिए, neurons जो होते हैं, they don't have ability to divide. Why? If the question comes here, you simple remember here that here why do not divides? Let us say here they do not divide because here the centrioles are absent. Cell organelles हैं जिनको आप किस नाम से जानते हैं? Centrioles are absent. और ये जो centriole होते हैं, they are essential for the
essential for the division of the cell. Spindle formation, आप cell division में जब आप पढ़ेंगे तो you will study about the spindle formation, and without spindle formation none of the cell can divide. So here the centrioles are absent, so they don't have capability to divide. इसलिए देखिए nervous disorder, spinal cord अगर टूट गया है, if somebody have broken his or her spinal cord in some accident, it cannot be repaired. If the body gets paralyzed forever till the person is alive, वो हमेशा के लिए पैरालाइज होगा. क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स एक बार ब्रेक होने के बाद क्या नहीं होते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं. एंड दीज सेंट्रियोल्स आर एसेंशियल, दीज आर एसेंशियल फॉर किसके लिए? फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल, for the division of the cell. So I have explained you 4 type of tissue. I am saying again 4 type of tissue. The first was epithelial tissue. The function was protection. The function was to form the lining of the hollow organs, and the origin was ectodermal, mesodermal and endodermal. Second tissue I have explained you, it is connective tissue. Here they connects the different parts of the body. An example I have given, that is blood and the limb. They supports the body. The example I have given, cartilages and bone. Origin is mesodermal. Without any exception, the origin is mesodermal. Then the third tissue, muscular tissue. The muscular tissue, obviously it includes the muscle, and its function is, it helps in movement and locomotion. Origin is mesodermal. I have explained the one exception here, ciliary muscles and the iris. इनका origin, ये muscles कैसी हैं, और ectodermal origin हो जाता है, they are found in eye. Then I have explained you nervous tissue. यहाँ पे include होंगे neurons, helps in control and coordination of the body. Origin is ectodermal except the microglial cells, except the microglial cells having the mesodermal origin. These microglial cells are the brain cells, and the brain cells होते हैं phagocytic cells होते हैं. Phago means eating, cytic means cell, ठीक है ना. तो microbes वगैरह को खाने का काम करते हैं, phagocytic हुए. Last point I have discussed you in that these neurons they do not divide. ये divide नहीं होते हैं. क्यों नहीं divide होते हैं? क्योंकि इनमें centrioles, cell organelles absent होते हैं, and when they are absent there is no spindle formation, and when there is no spindle formation the cells do not divide. Cells do not divide. So the disorders of the nervous system or the tissue or the neuron cell, once it damage forever, because they do not regenerate. Now we will deal with the epithelial tissue in detail. Okay, so epithelial tissue is here. Now see the first point. This epithelial tissue is very first formed tissue. It is very first formed tissue during embryogenesis. Embryogenesis के समय जो सबसे पहले टिश्यू बनता है वो कौन सा बनता है? Epithelial tissue. So all the points are important. I am putting the star here. All the points are important here. So they are the very first formed tissue of the body. सबसे पहले जो टिश्यू बनता है वो कौन सा बनता है? Epithelial tissue बनता है. Secondly, यहाँ पर प्लीज बोर्ड पे देखें कि यहाँ पे ये सेल्स हैं. These are the epithelial cells. द सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर पैटर्न पे है या इरेगुलर पैटर्न पे है? तो आप देखिए एक रो में सेल्स लगे हुए हैं तो डेफिनेट पैटर्न होता है. तो आपने बोला कि यहाँ पर सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली. सेल्स कैसे अरेंज्ड है? सेल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली. तो रेगुलर पैटर्न पे सेल्स का अरेंजमेंट होता है. तो these are the only tissue, this is the only tissue where the cells are arranged regularly. इसको छोड़ के कोई भी टिश्यू ऐसा नहीं जहाँ पे सेल्स रेगुलर पैटर्न शो करता हो. तो ये आप यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे डिस्कस करी. तीसरा प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि फर्स्ट देखिए वेरी फर्स्ट फॉर्म टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस के समय सबसे पहले बनने वाला टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है. यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर पैटर्न पे है. रेगुलर पैटर्न्स पे सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अरेंज होते हैं. नाउ सी हियर द वर्ड इज एपी. दिस इज एपी. एपी मीन्स अपॉन. एपी मीन्स क्या हुआ? अपॉन. एंड थीलिया मीन्स, the word is thelia means growth.
Thelia means growth. Now see, upon growth, epithelia, epi means upon, thelia means growth. So it is the only tissue which grow upon, it is the only tissue which grow upon other tissue, अकेला टिश्यू ऐसा है जो किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, और ये जो दूसरा टिश्यू हुआ इसको हमने क्या नाम दिया, कनेक्टिव टिश्यू. इसको हमने क्या नाम दिया, कनेक्टिव टिश्यू. इट इज गिवन एज कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वेरी फर्स्ट फॉर्म टिश्यू है. सबसे पहला जो टिश्यू बनता है वो एपिथेलियल टिश्यू बनता है. सेल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं रेगुलर पैटर्न में, रेगुलरली अरेंज है. इसके अलावा कहीं भी किसी भी टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर नहीं होता है. थर्ड मैंने बोला एपी मीन्स अपॉन, थीलिया मीन्स ग्रोथ. दे आर द ओनली टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, एंड दिस अनदर टिश्यू इज सीटी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया कि यहाँ पर there is no intercellular space. यहाँ पर प्लीज बोर्ड पे देखिए कि यहाँ पर दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, और देखिए यहाँ पर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती हैं. तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, और अगर यूजुअली एब्सेंट देयर इज नो इंटरसेल. इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होंगी, इफ प्रेजेंट तो दे आर वेरी स्मॉल. अगर प्रेजेंट हैं तो दे आर वेरी स्मॉल. अगर ये प्रेजेंट होंगी तो ये कैसे होंगी, बहुत स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती हैं. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू. नाउ सी हियर, मैंने बोला कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. सेल के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और जब नहीं है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्लड सप्लाई होगी, द वर्ड इज ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट. यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होगी, एब्सेंट होगी. और ब्लड सप्लाई जब एब्सेंट है तो वी से दैट एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो कैसा होगा, एवास्कुलर. एपिथेलियल टिश्यू इज एवास्कुलर. ए मीन्स नो, वेस्कुलर वेसल्स नहीं होंगे. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इट इज एब्सेंट. क्यों, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है. स्पेस नहीं होती है तो यहाँ पे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स वगैरह इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, और पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होगी. और ब्लड सप्लाई एब्सेंट है तो वर्ड क्या आ गया कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एवास्कुलर होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज आर एवास्कुलर, दैट इज दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई. उनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है. इतना क्लियर है यहाँ पे हुआ. अब देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, क्या लिया यहाँ पे देखते हैं. ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट, एवास्कुलर हो गया. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया अगेन कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं दे आर लिविंग सेल्स. एपिथेलियल सेल्स आर लिविंग, दे आर लिविंग सेल्स. ये लिविंग सेल्स होते हैं, और जब लिविंग सेल्स हैं तो इनको ऑक्सीजन भी चाहिए और क्या चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए. They need oxygen as well as nutrition. They are the living cells. These are the living cells. When they are living cells, so they need oxygen as well as nutrition. तो और हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये कैसे हैं, एवास्कुलर है, ब्लड सप्लाई नहीं है. तो ये अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को, अपने ऑक्सीजन को कहाँ से एक्वायर्ड करते हैं, तो आंसर होगा दे एक्वायर. ये सेल्स जो हैं वाइट कलर के सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, दे एक्वायर their oxygen plus nutrition from where, from the connective tissue. ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं. सो एक्वायर
ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कहाँ से? फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू बाय डिफ्यूजन के थ्रू, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये क्या करते हैं? अपने फूड को एक्वायर करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट बिकॉज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर। और जब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स ये जो होते हैं लिम्फ वेसल्स वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे एब्सेंट है। और जब ब्लड सप्लाई एब्सेंट हुआ तो हमने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू कैसा हो गया? एवास्कुलर। कैसा हो गया? ये एवास्कुलर हो गया। एपिथेलियल सेल्स लिविंग सेल्स हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दे आर द लिविंग सेल्स एंड वंस दे आर लिविंग सेल्स they require oxygen and nutrition, so they acquired their oxygen and nutrition from underlying connective tissue by the process of diffusion so ये point यहाँ पे clear हुआ। and now comes one more point is here what के यहाँ पर they have great power of regeneration. They have great power of regeneration. So these are the points with respect to epithelial cells. Once again I am repeating here the first point, that they are the very first formed tissue during the embryogenesis. Here the cells are arranged in regular pattern. Cells जो होते हैं they are arranged in regular pattern. Secondly मैंने यहाँ पे discuss किया कि यहाँ पर एपीथीलिया, एपी मीन्स अपॉन, थीलिया मीन्स ग्रोथ, they are the cells, only cells, tissue which grow upon another tissue, and this another tissue is connective tissue. Blue color lining, they are showing the connective tissue, so always grow upon the connective tissue. Next I have told you no intercellular spaces are present. If present they are very little spaces are present, so blood vessels, lymph vessels, they cannot penetrate the cell, so the blood supply is absent, so the tissue is avascular. So this tissue is avascular tissue, blood supply नहीं होती है। एपिथेलियल सेल्स लिविंग सेल्स हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इनको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? दे एक्वायर देयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलाइंग connective tissue, okay, by the process of diffusion. And last point I have discussed that they have great power of regeneration. जो cells होते हैं they have great power of regeneration. Once they are get damaged, they repair very quickly because the mitotic index is very high. Of these cells, so they have great power of regeneration. Now you see the white color cells. Now you see that white color cells are epithelial cells. Blue color lining showing the connective tissue, and if you see here that this is a partition present between the epithelial cells and the connective tissue, and this is called as basement membrane. So look here, this is basement membrane. I am writing here, this is basement membrane. Now this basement membrane, the first point regarding the basement membrane, it is non-living. The basement membrane is non-living. ये non-living होती है, ठीक है ना। This is non-living. Secondly, this basement membrane is acellular. A means no, कोई सेल नहीं होते हैं यहाँ पर, तो basement membrane कैसी हो गई? acellular. And third one, it is permeable.
परमिएबल। परमिएबल होती है, आपको मालूम है अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को जाना है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जाएगा और इन दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन है, अगर इम्परमेबल हुई तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कभी भी एपिथेलियल सेल्स पे नहीं पहुंचेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। नॉन लिविंग हो गई, नॉन लिविंग होती है, एसेलुलर होती है एंड कैसी होती है, परमिएबल होती है, इट इज परमिएबल। ओके, सो आई एम यहाँ पर नाउ सी it has two part. One line is here and this is one line is here, this one above line, this above line, it is basal lamina. I am writing here in short basal lamina, and one line is below, that is toward the connective tissue, it is known as fibrous lamina. 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 Now see here, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट हैं, टुवर्ड द एपिथेलियल सेल्स BL, BL स्टैंड्स फॉर बेसल लैमिना, BL स्टैंड्स फॉर बेसल लैमिना। अब फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ basement membrane. This is the first part of basement membrane, and this basal lamina, first of all, it is towards the epithelial cell. Epithelial cells rest कर रहे हैं जिसके ऊपर, वो क्या हुआ, basement membrane. Basement membrane का कौन सा पार्ट हुआ तो क्या आ गया, basal lamina. It is basal lamina. So this is about the basal lamina. Now this basal lamina, it is made up of, this basal lamina, it is made up of the word is glycoprotein. It is made up of glycoprotein. So basal lamina is made up of glycoprotein and it is secreted by, कौन इसको secrete करता है, तो it is secreted by, the word is epithelial cells. It is secreted by epithelial cells. तो इनको secrete किसने किया, epithelial cells. फिर से देखिए, ये ग्रीन कलर का पार्टीशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, epithelial cells और connective tissue के बीच में बनाया हुआ है. So look here, this green color partition, it was named as basement membrane. This basement membrane, I have already explained you, it is non-living, it is acellular, and it is permeable. I have already explained you. Now it has two parts. One part is towards the epithelial cell, and which is towards the epithelial cell, it is known as basal lamina, and this basal lamina is made up of glycoprotein. This basal lamina is made up of glycoprotein and it is secreted by, कौन secrete कर रहा है, epithelial cell. Now comes the second part, FL. Now comes the second part, FL. Now see what happened here. FL stands for this one. This is fibrous lamina. The word is fibrous lamina. This is fibrous lamina. ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ. This is fibrous lamina and above part is basal lamina. तो basal lamina हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना. fibrous lamina में क्या होता है कि first of all it is made up of the first part is collagen fiber. These are the protein fibers. It is made up of collagen fibers. देखिए, क्योंकि fibers का बना हुआ है तो word क्या आया हुआ है, fibrous. It is made up of collagen fiber. And secondly it is made up of, the word is hyaluronic acid. It is made up of hyaluronic acid. ठीक है ना, ये hyaluronic acid का बना हुआ है. This hyaluronic acid is also called as animal cement. It is also called as animal cement. ये animal cement भी कहलाता है. And it is secreted by, third point मैं ले रहा हूँ कि it is secreted by. तो इसको secrete कौन कर रहा है, तो secrete by word is connective tissue. कौन secrete कर रहा है, connective tissue secrete कर रहा है. So this is all about the basement membrane. I am repeating here once again. I am repeating here the first point, that basement membrane, it was
It was non-living. बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा था? नॉन लिविंग था. सेकेंडली बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा था? इट वॉज ए सेलुलर. इट वॉज ए सेलुलर. बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा था? परमिएबल. इट वॉज परमिएबल. So these are the three properties of basement membrane. Divided into two parts. The above part, basal lamina, it was made up of glycoprotein and it was secreted by the epithelial cells. So secretion है, secretion हो तो हुआ कैसा हुआ? Non-living हो जाता है. And the below part, this one, the below part, it is known as basal, fibrous lamina. And this fibrous lamina, it is made up of collagen fiber, it is made up of hyaluronic acid, and this hyaluronic acid is called as animal cement, and this animal cement is secreted by connective tissue itself. So if the question comes here that basement membrane is formed by, so what would be the answer? Yes, answer would be both epithelial cells and connective tissue, because basal lamina is formed by epithelial cells and fibrous lamina is formed by connective tissue. So this is the brief about the epithelial tissue. Now see here. Now see once again here. This white color cells, they are epithelial cells. Partition, green color partition which is present here, this one, the green color partition which is present, I am shading here, it is basement membrane. ठीक है ना? So all the cell, property of epithelial cells, property of epithelial tissue is look here that these cells, all the cells, they rest upon basement membrane, and below the basement membrane connective tissue is present. ठीक है? So this is all about the intro about the epithelial tissue. Again, this is the epithelial tissue. The white color cells you are seeing here, again they are the epithelial cells. These are epithelial cells. This green color, it is basement membrane, and blue color, it is connective tissue. Now see, all the epithelial cells, they rest upon basement membrane. The lower portion of the cell is connected with basement membrane, but this is the free surface. ये free surface होता है, and it is variously modified. This free surface is variously modified. So let us see how it is modified. If here the modification becomes something like this. Look here. These are the modifications here. ये modification हो गया free surface का. ये modification हुआ free surface का. तो free surface पे modification हो गया. Plasma membrane is thrown into minute processes, and these minute processes, they are called as microvilli. इसको हम किस नाम से जानते हैं? They are called as microvilli. ठीक है ना? तो microvilli के साथ point जो याद रखना है, number 1 कि यहाँ पर they are minute processes. They are not the large one, they are the minute processes. ठीक है ना? They are minute processes. ये छोटे छोटे process होते हैं. दूसरा, ये जो होते हैं, they are non-motile. These processes are non-motile. They do not move. Move नहीं करते हैं. Next point आता है, they are non-contractile. Contraction भी show नहीं करते हैं. They are non-contractile. They do not show contraction also. Contraction and movement is absent here. तो करते क्या हैं? This is the important word. They increases surface area. For absorption. They increases surface area for absorption almost 20 times. कितने times बढ़ा देते हैं? 20 times. And the example is gall bladder. It is the bladder, it is the storage part present below the right lobe of the liver. लिवर के राइट लोब के ना जिसमें बाइल इकट्ठा होता है, स्टोरेज शो करता है, वो गॉल ब्लैडर हुआ. तो देखिए यहाँ पर पहला मॉडिफिकेशन मैंने आपसे डिस्कस किया. किसके बारे में किया?
किसके बारे में? फर्स्ट मॉडिफिकेशन इट इज माइक्रोविलाई. फर्स्ट मॉडिफिकेशन इट इज माइक्रोविलाई. आई हैव एक्सप्लेन यू दैट दीज आर द माइन्यूट प्रोसेसर, छोटे छोटे प्रोसेसर्स होते हैं. सेकंड मैंने एक्सप्लेन किया दे आर नॉन मोटाइल, मूव नहीं करते हैं. जब मूव नहीं करते हैं तो हमने बोल दिया कैसे हुए? नॉन मोटाइल हुए. थर्ड मैंने आपको बोला दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, दे डो नॉट शो कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है. और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ये करते क्या हैं. तो करने में क्या बताया मैंने आपको कि ये इंक्रीज करते हैं किसको? सरफेस एरिया को. किसके लिए इंक्रीज करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. एंड हाउ मेनी टाइम्स? अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स. 20 टाइम्स दे इंक्रीजेस द surface area for absorption. And the example is given as gall bladder. example क्या दिया है यहाँ पर? gall bladder का example दिया है. अब दूसरा मॉडिफिकेशन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर तो देखते हैं क्या होता है. सेकंड मॉडिफिकेशन क्या हुआ? सेकेंड मॉडिफिकेशन, लेट अस से सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या होता है यहाँ पर? Look here, again it is a free surface of the cell, and now see in free surface what is present. On this free surface a large protoplasmic processes are present. Large protoplasmic processes are present, something like this. These are the processes, these are the large one, and once they are large one, so these are the processes. These are the now this structure is called as cilia. This structure is called as cilia. This structure is called as cilia. cilia क्या है यार? cilia, ये लंबे लंबे प्रोसेस होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लार्ज प्रोसेसेस. दे आर लार्ज प्रोसेसेस. ये बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज हियर दैट दे आर मोटाइल. ये कैसे होते हैं? दे आर मोटाइल. तो सेकेंड पॉइंट इज दे आर मोटाइल. दे आर मोटाइल. ये कैसे हुए? दे आर मोटाइल. थर्ड पॉइंट क्या हुआ? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल. ये कैसे हुए? दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल. They are contractile. So they are the large processes. They are the large processes. They are motile. They are contractile. और ये करते क्या है? फंक्शन क्या होते हैं? डायरेक्ट करते हैं. किसको डायरेक्ट करते हैं? डायरेक्ट फ्लूइड और पार्टिकल. डायरेक्ट फ्लूइड और पार्टिकल इन वन डायरेक्शन. तो ये किसी भी फ्लूइड या पार्टिकल को क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं किसी एक डायरेक्शन में. मल्टी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्ट्स द फूड और द पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन. तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपसे डिस्कस करूँगा. इससे पहले कि ये मैं मिटा दूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ा फ्री सरफेस पे था, और फ्री सरफेस पे जो मॉडिफिकेशन हुआ वो कौन सा हुआ? सीलिया. क्या हुआ? सीलिया. अब सीलिया में यहाँ पर ये सीलिया स्ट्रक्चर है जिससे ये इमर्ज हो रहे हैं. इसको यहाँ पर इनको बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल्स. क्या बोलते हैं?
वर्ड इज बेसल ग्रेन्यूल। तो जहाँ भी सीलिया प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या, बेसल ग्रेन्यूल। तो ये जो डॉट जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दीज आर बेसल ग्रेन्यूल, जिससे सीलिया इमर्ज हो रहे हैं। अब सीलिया दे आर लार्ज प्रोसेस, लार्ज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसर्स, ये बड़े बड़े होते हैं, मोटाइल होते हैं, दे आर मोटाइल, दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल। दैट फंक्शन क्या हो गया, दे डायरेक्ट्स द फ्लूइड और पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में किसी फ्लूइड या पार्टिकल को क्या करते हैं, ये भेजने का काम करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपसे बताना चाहूँगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कौन से हैं, क्या हैं। Example number one. Example number one. It is trachea. सीलिया का पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, ट्रेकिया। तो अगर मैं ट्रेकिया को रफली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द ट्रेकिया। दिस इज ट्रेकिया, दिस इज T फॉर ट्रेकिया। अब मैंने बोला कि प्लीज बोर्ड पे देखिएगा कि यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ देखिए क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सो आई एम मेकिंग हियर द सीलिया। ये सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है बहुत सारे, ये सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है ना, दीज आर सीलिया। तो यहाँ पे सीलिया का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे होता है म्यूकस, बहुत सारा म्यूकस होता है। तो ये जो सीलिया जो होते हैं म्यूकस को डायरेक्ट करते हैं अपवर्ड, दे डायरेक्ट द म्यूकस अपवर्ड, दे डायरेक्ट द म्यूकस अपवर्ड। तो ट्रेकिया में सीलिया का काम मैंने आपसे डिस्कस किया कि देखिए सीलिया जहाँ भी प्रेजेंट होगा, सीलिया जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो किसी पार्टिकल को या किसी फ्लूइड को एक डायरेक्शन में भेजने का काम करेगा। तो ट्रेकिया में अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ये ट्रेकिया में अंदर साइड पे सीलिया है, तो यहाँ म्यूकस होता है, बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होता है, ग्लैंडुलर सेल, गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं। तो वो अंदर ना जाए, ये लंग्स में ना जाए, ये कहाँ जाएगा, आउटवर्ड ड्रैग करते हैं, कौन करते हैं, सीलिया। तो सीलिया ड्रैग द म्यूकस आउटवर्ड। सीलिया जो होते हैं दे म्यूकस को क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, म्यूकस को ड्रैग करते हैं, म्यूकस को ड्रैग करते हैं। कहाँ पे, इनसाइड नहीं, कहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे, आउटवर्ड। कहाँ पे जाएगा, आउटवर्ड। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन ट्रेकिया। द सेकेंड एग्जाम्पल I can say here, the second example is I am taking here second example. It is fallopian tube. Second example is fallopian tube. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है fallopian ट्यूब। अगर मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज द पार्ट ऑफ द fallopian ट्यूब, दिस इज द fallopian ट्यूब पार्ट। Look here, fallopian tube. This is the fallopian tube. This is fallopian tube. और देखिए इस fallopian tube में अंदर की तरफ सीलिया, इस fallopian tube में अंदर की तरफ क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं। ये सीलिया यहाँ पे लगे हुए हैं, एंटायर पार्ट में सीलिया है। उस साइड भी पार्ट होगा, मैंने लिया। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। ये पार्ट हुआ किसका, यूट्रस का पार्ट हुआ। दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। This is the part of uterus. Somewhere here is ovary is present. तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सीलिया होते हैं, ये जो सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये जो सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट हैं,
ये जो सीलिया पे है यहाँ पे, ये क्या करेंगे, जो एग यहाँ पर आया था, ये जो एग है, मान लेते ये एग हुआ, तो इस एग को क्या करेंगे, कहाँ पे ले, यहाँ पर आएगा, और देखिए इस एग को पहुँचाएंगे कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे पहुँचाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल कर रही है, जर्नी ट्रैवल कर रही है, तो वो एग को ट्रैवल ले जाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में सीलिया करेंगे। तो सीलिया देखिए हेल्प कर रहे हैं एग को ले जाने के लिए, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, ये इन्फंडिबुलम पार्ट है, ये बाद में देखें। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, एग का होगा। ट्रेकिया में जो मूवमेंट हुआ था, सीलिया म्यूकस को कहाँ ले जा रहे थे, आउटवर्ड, बाहर की तरफ ले जा रहे थे। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में एग जो होगा उसका मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट कराएंगे कौन, यहाँ पे सीलिया, कौन कराएंगे, सीलिया कराते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल which is in your book, it is about the let us see. So the third example with respect to cilia, I have explained you the trachea. ट्रेकिया में क्या फंक्शन था सीलिया का, दे ड्रैग द म्यूकस आउटवर्ड। सेकेंड वॉज फेलोपियन ट्यूब, वो वहाँ पे एग को कैरी कर रहे थे फेलोपियन ट्यूब के इनिशियल पार्ट से डिस्टल पार्ट ले जाने के लिए। एंड द थर्ड एग्जाम्पल, it is present, the cilia are present in cavity, it is present in cavities of brain, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन की कैविटीज़ में। और इन कैविटीज़ को हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रिकल्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रिकल्स नाम देते हैं। और इन वेंट्रिकल्स में ये डायरेक्ट करते हैं किसके, दे डायरेक्ट फ्लो ऑफ CSF, डायरेक्ट फ्लो ऑफ CSF, C stands for cerebral spinal fluid। देखिए हम लोगों के ब्रेन के अंदर कैविटीज़ हैं, उन कैविटीज़ को हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। और उस वेंट्रिकल में क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड जो होता है उसको हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ नॉन एज सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, इस नाम से जाना जाता है। और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो कंटिन्यूअस होता है। तो वेंट्रिकल्स में जो फ्लो होगा वो किसकी हेल्प से होगा, अगेन इट इज़ विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, cilia, they are the large processes, protoplasmic processes, they are motile, they are contractile, basal granule is present here. Next मैंने बोला main function is it directs the flow of any fluid or particle in one direction. First example was trachea, I have explained you. Here the cilia directs the mucus upward. Second example was fallopian tube, where the egg was directed to the ampullary part, that is ampulla part, with the help of cilia. Third example is cavities of brain. It is present in cavities of brain also, where the fluid is present, which is known as CSF, that is cerebral spinal fluid. And this fluid is continuously directed in one direction for the proper circulation of the fluid. So this is all about the cilia. Now comes the third modification. And third modification, it is, let us see, third modification. What is the third modification? Look here, if the modification is something like this, this is the modification. Now this modification, it is known as stereocilia. And this is the third modification. First was microvilli, second was cilia, and the third is stereocilia. अब ये जो stereocilia जो होते हैं, they are also large. Second, they are non-motile. ये कैसे होते हैं? They are non-motile. Third, they are non-contractile.
यहाँ पे ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। थर्ड, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया, बेसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, क्या है इनका फंक्शन, तो दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ये केवल सरफेस एरिया को क्या करते हैं, किसी भी पार्ट के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड एग्जांपल यू कैन से हियर, इट इज वास डिफरेंस, पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म डक्ट का वास डिफरेंस एक नाम आया। एंड इट इज ऑल्सो, सेकेंड एग्जाम्पल इज एपिडिडाइमिस, तो ये यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया थर्ड मॉडिफिकेशन। एंड थर्ड मॉडिफिकेशन को हमने नाम क्या दिया, स्टीरियोसीलिया। क्या नाम दिया, स्टीरियोसीलिया। सो दीज स्टीरियोसीलिया, दे आर लार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। सेकेंडली दे आर नॉन मोटाइल होते हैं, डो नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। दे आर non-contractile, they also do not show any sort of contraction. And overall यहाँ basal granule absent है, जो सीलिया में basal granules present थे वो यहाँ पे क्या होते हैं, absent होते हैं। basal granules जो होते हैं absent होते हैं। ये करते क्या हैं, what is the function of stereocilia when they are present on the free surface of epithelial cells? Their function is to increase the surface area. They increases the surface area, and the example is vas deferens sperm duct. ठीक है ना, ये sperm duct है, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इट इज द sperm duct, ठीक है ना, इट कैरीज sperm आउटसाइड। ये sperm duct के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इट कैरीज द sperm आउटसाइड, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट आता है एपिडिडाइमिस, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द modification at free surface of epithelial tissue. I am repeating once again. The first was microvilli. The main function of microvilli क्या था? It increases the surface area for absorption. This is the important one. Function is important. The second one was cilia. And cilia's main function was that it directs the particle or any fluid in one direction. I have explained you the three example. Trachea. In trachea, the cilia directs the mucus upward. Secondly, fallopian tube directs the egg. And third, it is the ventricles of brain, that is the cavities of the brain which are filled with CSF. A fluid is filled there, that is called as cerebral spinal fluid. उसका circulation help कराएगा कौन? Cilia help कराएगा. And third modification is stereocilia. And these stereocilia, they are the large processes. They are again non-motile नहीं होते हैं. They are non-contractile. They do not show any contraction. Basal granules are absent. Basal granules are only concerned with cilia, and their main function is to increase the surface area. Two example you have to remember here: vas deferens sperm duct, which carry the sperm outside. Okay, and this is epididymis. Again, it is the part of male reproductive system where the maturity and motility of the sperm is attained. So this is all about the modification at free surfaces of epithelial cells. Thank you.